So now जो मैंने एबे देखी थिबे एबे ई क्लास टा ठीक अछि so टिके प्रॉब्लम हे जायतिला so sociology optional PYQs sociology optional PYQs uh, okay now it is correct से टिके प्रॉब्लम हेतिला आ गोटे क्लासेस रो पड़ी जायतिला Okay, so sociology optional आमे first 10टा questions we have discussed and out interesting कथा आपण देखिबे sociology optional majority questions first 5-6टा यूनिट रो सब questions आसी आपण देखंतो this question this question this question देखिए अब ये अछि relation with author this question reference group content analysis suicide Durkheim हो matron हो देन कार्ल मार्क्स हो मैरेज आसीगला न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम को आसीगला तो ये सब सारा क्वेश्चन देन एटी डरखाइम हैला आपनकर मैक्स वेबर जो रिलीजन हैला ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आसी आपनकर थिंकर्स पार्ट रू 50% questions comes from the thinkers or thinkers related questions so you cannot leave the thinkers one you cannot leave the thinkers so do prepare thinkers very well. So define marriage discusses various forms of marriage with suitable example. So you have to define marriage. So marriage is one of the universal social institutions established and nourished by human society. It is closely connected to the institutions of family. Marriage is an institution of society with purpose, functions and forms in different society, but it present everywhere as a then तो या ऊपर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन आजिकल जमाना रे होची मैरिज एंड डिवोर्स रिलेटेड सो यू हैव टू अवेयर ऑफ इट करंट अफेयर्स यार डाटा रखी थिबे काहेकि ना या ऊपर कुछ आगु को आसी पारे ये ऑनगोइंग प्रोसेस दिस इज द ट्रांजिशन फेज ऑफ द सोसाइटी and you need to keep tab on every current development कौन या रिलेटेड होची ये सो ये यूनिवर्सल बेसिकली इंस्टीट्यूशंस बट जो इंस्टीट्यूशंस फैमिली सहित अटैच है तार पर्पज फंक्शंस डेफिनेशन जते आमे देखिबा सेते को आमे थिंकर्स डेफिनेशन करले बेटर हबो सबटू बेटर डेफिनेशन हला मालिनोस्की रो डेफिनेशन सो अकॉर्डिंग टू गिल according to Gillen and Gillen marriage is a socially approved way to establish a of family of procreation so Gillen and Gillen कौन कहले marriage is a approved way of establishing a family of procreation then Malinowski कौन कहले marriage a contract marriage is a contract for the production and maintenance of children contract for the production and maintenance according to Robert H Lewis a marriage is a relatively permanent bond marriage is a relatively and permissible mates okay so कुछ तुम्हें कौन बुझिल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सो ये जो डेफिनेशन ये
एग्जामिनर को तुम्हें जस्टिफाई करेलो कि यू नो द concept of marriage, not like a GS student. That is the difference between you and a GS, normal GS student. Otherwise, everyone knows the definition of marriage. Everyone define the marriage. But who define marriage in terms of the thing, the answer writing? Why I am, you have seen my analysis from the last 10 questions I have discussed in our YouTube channel also. You are come late, you can see. But thing is, you need to know कि a thinker को you have to include, then only you are specialized. No, you are a sociology student, it is the level of the subject, and if you don't know, the syllabus, if you don't know the thinkers definition, then how can you become a sociologist or a sociology optional student? So you need to know, and you need to define according to the thinkers. Every questions I have solved, you might have seen a pattern. Some thinkers, some integration of current affairs related to this topic. I will integrate here, and recent incident jonta heichi related to marriage, I will introduce here. I will implement here. I will incorporate here. So that is need get good marks. That small changes give you many advantages over the other student, and it will not develop overnight. It will need time, and time uh, of practice, the repeated practice. The more practice you do, the more you develop the art of writing the skill. That is the things you need to do. So that is why I am telling. So ମୁଁ ଏଠି क्वेश्चंस କରିବା नुहे कि ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ क्वेश्चन तुमर सॉल्व कर देले तुम एग्जाम रो सेम क्वेश्चन आसी जिवो, बट आई एम हियर make you understand that how to write the question. If you don't know the writing, if you don't know the capability of writing the questions, then this is not for you. Basically, if you are studied well, you know well, but you are not able to write properly, you are not able to develop your skill of writing, then it is not in your way to get into the very good. So it is very important for you. So do follow, and ମୁଁ କିଛି क्वेश्चंस करेवार मेन रीजन that is why last year questions, जो recent questions, and ମୁଁ with तुमको पूरा प्रॉपर केमिति लेखिबो कहू, so that तुम पाखरे ଗୋଟେ आइडिया हे जिवो, and I do repeatedly I'll do. ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା कि ମୁଁ यूनिट वाइज भी मध्य करेबी पीवाई को यूपीएससी एज वेल एज, and for that need to come join करंतु बहुत ही माने ऑथेंटिक वे रे आपण पाठ पढी, दैट इज फॉर श्योर. ओके, सो मु दीटा थिंकर्स डेफिनेशन कहली, देन क्वेश्चंस थिला देखो. फर्स्ट हला डिफाइन मैरिज, मु डिफाइन करली मैरिज एठी सोशल इंस्टीट्यूशन के नॉर्मल डेफिनेशन, then questions is asked about the forms of the marriage with suitable examples. So next I'll discuss forms of the marriage. Marriage forms are monogamy, one man, one woman. The most common and legally accepted over the worldwide. So this is monogamy, polygamy, polyandry. You can draw this kind of a picture. Okay, kind of picture. So monogamy ro फिर पुनी serial monogamy, that is multiple marriage over a lifetime after divorce or widowhood marriage करी. Then strict monogamy, गोटिए lifelong, one union, one partner. So see example है practice in the most modern society including Europe and USA. Sociological aspect कौन ना, it promote emotional stability and harmony. So ये देखो monogamy, serial monogamy, straight monogamy, ये दिटा में strict monogamy, strict. देन polygamy, ये मुझे देखो एठी आनिली करंट अफेयर्स को गाली जोंडे कि हिमाचल प्रदेश रे देखा जाइतला. Polygamy is the practice having multiple spouses at the same time. Polygamy रो गुटे दीटा, गुटे ला polygamy and polyandry. Polygamy माने multiple women, gyna part of a woman, gynecologist, gynae. So that is मुस्लिम माने ये प्रैक्टिस करंती, माने वुमेन बेसी थांती, अफ्रीकन ट्राइब्स माने प्रैक्टिस करती मेल मानकर ये था. देन पॉलीएंड्री,
जैसे कि one woman marries to both men. Okay. For example, Toda tribe जोंटे कि नीलगिरीस एंड जोनसर बउअर ऑफ द हिमाचल प्रदेश ये आमे देखी थिले रिसेंट एग्जांपल कोन ना सुनीता चौहान दी जन टू ब्रदर्स को मैरिज करथिले प्रदीप आउ कपिल नेगी 2025 The marriage was conducted under the tradition of Hatti tribes. So ये very important. Hatti tribe तांकर practice था उन्हें जुड़ीदार जुड़ीदार. I have taken some basically मुझे यहाँ पर एक नहीं थी and was openly celebrated, making it a rare public affirmation of the custom. So scarcity of women or economy necessity जो जने women yes call. So basically ये तुमको देखो केमिति मु क्वेश्चंस करेली तो you have to give the present example. Current affairs पढ़ुथुबो then ताको example दबो then better आहुरी understand better marks पाई परिबो. Group marriages two or more ये सब मु details रे पढ़ोनी काहेकि ना we will discuss in the classes जोटे कि फंडामेंटल क्लासेस वगैरह रे बट खाली मु केमिति आर्ट ऑफ राइटिंग केमिति हबो मु सेटा कहि दोची. Two or more men marrying two or more women collectively set like group marriage is rare but observed among the certain tribals communal societies such as Oneida जोटे कि USA. So group marriage means marriage of two or more women to two or more men. Similarly sologamy ये देखो recent example ये गुजरात रे practice हेता sologamy निजे निजे को मैरिज करबा ये गोटे माने गोटे फर्स्ट टाइम एमती हेइतला इंडिया रे तो ये फेमस हे गले भी मध्य marrying oneself, a symbolic ceremony where as individual commit to self-love, self-acceptance, and self-respect. This is very important. It is not legally recognized in the most country, but it gained attention as a social and cultural phenomena in the recent. Just take example है समा सामा बिंदु ये नाटा मन रखिबो ये आपरे एग्जांपल थिला 24 वर्ष र थिले वुमेन जे कि ये मीडिया अटेंशन पाइला कारण से गोटे मैरेज सेरेमनी हला से निजे निजे को मैरेज कला निजे सिंदूर पिंजला निजे कला मैरेज मिरर देखी कि गुजरात रे बदोदरा रे सेरेमनी हला एंड ये पूरा बहुत सारा न्यूज पेपर वगैरह रे आसी थिला गोटे पॉपुलर भी हे गला फर्स्ट टाइम एमती गोटे हला तो सोलोगेमी एवं से जो मैरेज हला हिंदू रिचुअल्स अकॉर्डिंगली ओके सेइथरे वेरी इंपोर्टेंट दिस वन. तो जदि आमे देखिबा तो क्वेश्चंस देखले मु केमिति लेखिली बहुत किसी एक्स्ट्रा करिनी थिंक हला मु थिंकर को इनक्लूड कली मु करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कली व्हाइल राइटिंग देन सी यू सी योर मार्क्स विल वेरी फॉर श्योर. If you include in every questions you will get at least 50 60 marks 70 marks above what you are getting or what you get. So marriage as an universal takes diverse forms of depending the economic, demographic, and cultural context. While monogamy dominates modern society, forms like polygyny and polyandry highlight social adaptation to specific needs and conditions. Specific needs conditions. Okay, so ये questions बुझीगला. Next question. What provision are there in new education policy? देखो एटा पूरा purely current affairs education system ऊपर पड़ी जी and purely current affairs. What provision are there in new education policy 2020 with regard to equality of educational opportunity? Regard to equality of opportunity. So national educational policy or new educational policy ये equality of educational opportunity ऊपर इंपोर्टेंस देइछि तो यार बैकग्राउंड विषय नॉलेज रहिबा जरूरी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्ये को जाए स्ट्रांग एम्फासिस ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी often framed as a equitable and inclusive education so that children and learners from all background especially from historical disadvantaged group are able to access and benefit from quality educations. Below are the key provision and measures in new education policy related to ensuring equality of educational. So key provision of equality or equity in new education policy and national policy. So ये basically emphasis on equity and inclusion. So ये questions तुमको attempt करिया हेले you have to know the national education policy.
एइथरे पूरा करंट अफेयर्स रिलेटेड कहना ये न्यूज था। तो 2020 अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिफाइन इक्विटी एज ए प्रोवाइडिंग एक्सेस सेम जो एजुकेशन सिस्टम पढ़ाए से को एग्जांपल मध्य दिए सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी। So you needed to study whenever I am taking the fundamental classes. I will take care of this. Policy highlight the need for overcome barrier faced by socio-economically disadvantaged group, including SC, STs, and the OBC, minority, women, transgender, children with disability, and those from rural, remote तांको पाई मध्य चालछि। And gender inclusive तो गुटे हला कोन disadvantaged group पाई then equity and inclusiveness करिया पाई जेंडर इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस को मेजर करिया पाई एस्टैब्लिश जेंडर इंक्लूजन फंड सो दैट क्वालिटी एजुकेशन टा समस्त पई इक्वली होबा दरकार ना कि जने पैसा अछि से भलो पाठ पढिबा जने पैसा नै से भलो पाठ पढिबा नाही। फोकस ऑन जेंडर सेंसिटिव करिकुलम सेफ स्कूल एनवायरनमेंट्स and provision of bicycles sanitation facility and conditional cash transfer to promote female then inclusion of SED जोंडे कि specially education Z creation of SEZ in disadvantaged region to provide additional support जोंठी माने जेमती ट्राइबल एरिया हो फॉरेस्ट एरिया हो ई सब रे टिके हेल्प करा जो एक्स्ट्रा एडवांटेज टारगेटेड स्कीम ऑफ एससी बेसिकली एससी डीजीस सोशली एससी एंड ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन ये सब कैटेगरी जाउछंती डिसएडवांटेज ग्रुप and recruit the teacher from marginalized group to serve a role model valia tanku student ro hejo universal access to participation emphasis on universal access from pre-primary to secondary education for flexible entry and exit strengthening alternative and open schooling system to reach dropout and working children provision for free boarding facility in the lines of Jawahar Navar Vidyalaya the underprivileged area so inclusive curriculum and pedagogy तो करिकुलम ये बेसिकली डिटेल्स यार जो आमे एजुकेशन पॉलिसी उपरे मोठी आउ बेसी डिटेल्स रे you will understand that a direct question equity and higher education equality in higher education पाई gender inclusion fund हबो सहितरे gross enrollment ratio को आमे increase करिवा जीआरई language and cultural equality language and cultural promotion of mother tongue regional language ये जो medium of instruction till grade 5 to reduce disadvantage then so new education policy or national education policy envision education greatest equalizer a means to achieve social transformation economic development and national provision for equality of educational opportunity are comprehensive addressing access participation and learning outcome. However, the real challenge lies in implementation ensuring that policy intention translate into actual equality in classroom ये थिला तो ये ग्रुप ए रो हमर टोटल 12टा क्वेश्चंस थिला 12टा रो हमें 10टा तो तुमको करिया पड़िबो बट मु 12टा रो 12टा सॉल्व करिकि तुम देखि दिले गोटिए क्वेश्चन थिला जे कि डायरेक्टली करंट अफेयर्स लिंक बट जेतले मु एजुकेशन सिस्टम पढाए सेते बेले मु ये जिंसटा पढाई दिए काहेकि ना करंट अफेयर्स को मु क्लब कर दिए तो जेतले पढा हबो तुमरो जेतले फंडा फाउंडेशन बेचेस रे जो माने रहिबे तांको पई तो ये कवर हे जिवो ओके तो ये आमे देखि देले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उपरे देन ग्रुप बी
तो एक क्वेश्चन से देखो ग्लोबलाइजेशन ऊपर पचारि एटा वेरी माने general questions. This is general questions. What is globalization? What is globalization? Elaborate in details the positive and negative impact of globalization on positive and negative impact of globalization on the women. So देखिए globalization refers to the increasing interconnectedness and interconnectedness and interdependence of the world in economic, political, cultural, and technological sphere. According to Anthony Giddens, globalization is the intensification of worldwide social relation linking distant localities. देखो, what I did, समस्त नॉर्मल लिखिए कि ग्लोबलाइजेशन कौन ना इंटरकनेक्टेडनेस इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल ये नॉर्मल डेफिनेशन एवरीवन नोज बट थिंग इज हियर I included the thinker's definition Anthony Giddens कौन the intensification of worldwide social relation linking distance look definition of Anthony this is the specific. This is sociology optional student will write like not this is. So it has transformed not only market economies but also social structure, gender relation and cultural identity. For women, globalization has been both empowering and exploitative, bringing opportunity as well as challenges. So introduction देला elaborate details positive and negative. So globalization आमे देखी देले तार positive. So गुडेला positive impact of globalization देला economy empowerment पेमेंट अपॉर्चुनिटी दउची आईटी सेक्टर वगैरह जो बीपीओ टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ये इंक्रीजिंग होइची एवं वुमेन्स र पार्टिसिपेशन मध्ये इथर बढ़ीची एंड एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये बढ़ीची एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट एंटरप्रेन्योरशिप कोन एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट माइक्रो फाइनेंस हैज एनकरेज्ड वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज सेवा सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इकोनॉमी पार्टिसिपेशन हैज एनहांस्ड वुमेन्स डिसीजन मेकिंग पावर विदिन women's decision making power with the then educational awareness. Globalization has facilitated the spread of education. Globalization has facilitated the spread of education, especially through NGOs, media, international programs like Education for All. More women are entering higher education, particularly in STEM and management. Clear? So economy empowerment, education and awareness. So education को spread करा होची. Similarly, political and social empowerment, कि communication हला, media हला, communication and media have raised the awareness about the women's right, gender equality and feminism. Women movement, कि gender bias against gender violence, sexual harassment, wage inequality against मध्य protest हवा, movement हवा. Cultural transformation, exposure to global values has challenged the patriarchal tradition and promoting individual autonomy and gender equality. Is there a positive impact? The negative impact, जेमिति exploitation in the labor market. Exploitation in the labor market. Many women are employed in low paid, in unorganized sector, such as garment manufacturing and domestic. The feminization of labor often means flexible, and temporary employment with minimal social security. Commodification and objectification. So feminization of labor जने कि ताकू चीफ दिया होची टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट दिया होची जेमती वुमेन मान को खास करके वुमेन एम्प्लॉयमेंट पेड कम करा होची then the consumer culture promoted by globalization often commodifies the female body and through advertising entertainment and social media reinforce gender stereotype under the guise of increasing inequality increase होची globalization जुगु basically uneven globalization women from urban and elite background see more than जेतिक माने पाउचंती इन्फॉर्मेशन ठीक से अर्न करूचंती रूरल एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी सेमती पाउनाती डिजिटल डिवाइड गोटे रोची अर्बन एरिया रे बेसी भलो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस अछि बट रूरल एंड पुअर वुमेन से भलिया अपॉर्चुनिटी पाउनाती सिमिलरली कल्चरल होमोजेनाइजेशन global media often promote Western ideas, beauty, and success, leading to cultural alienation, identity conflict
the women. Traditional support network and community value sometimes weaken करे, then double burden. Even as women enter the global workforce, domestic responsibilities remain unchanged, leading to stress and work-life balance. Work-life balance टा बहुत बड़ा issue. So globalization has reshaped women's life in complex way, creating new space for empowerment while reinforcing existing. Impact depends on class, caste, region, and access to resources. For globalization to truly empower women, policies must focus on gender-sensitive labor laws, equal wages, digital inclusion, education, and social protection. In essence, the goal should be to make globalization inclusive, transforming structural inequalities rather than producing. ग्लोबालाइजेशन उपरे तो यहाँ समस्ते लिखिपारे क्रिटिकली एग्जामिन डरखाइम थियोरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर डरखाइम देइथिले प्रथम थर पई एवं ये सोशियोलॉजी रो फाउंडिंग फिगर माना जाए. ये एनालाइज करथिले कि ये केवल डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फेनोमेना बट इज ए सोशल फैक्ट जोंडे कि सी कंट्रीब्यूट करछि मोरल एंड सोशल कोहेजन ऑफ द. His seminal work, The Division of Labor in the Society, से जो कामटा करथिले 1893, Division of Labor in the Society. Examine how social solidarity changes as a society evolves from simple to complex. Social cohesion and solidarity. Durkheim argued that division of labor creates organic solidarity in complex society and fostering interdependence. There is two types of solidarity defined by Durkheim. जोंटा कि गोटे हला ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड आ गोटे हला ये अच्छा जवाब कहीं दउन. टू टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी देखि ट्रेडिशनल सॉलिडारिटी ट्रेडिशनल के ऊपर फोकस करे. So Durkheim argued that division of labor creates organic solidarity in complex society, fostering today's globalized world. This concept is even more apparent international supply chain and specialized rule, creating a web of global. Example, the COVID-19 pandemic highlight how various sectors, healthcare, technology, and logistics are interconnected and crucial for. So इसे कहिथिले कोन इकोनॉमी नुए ये सोसाइटी ऊपर डिपेंड करे, सोशल फैक्ट ऊपर डिपेंड करे. ये कहले ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इन द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी फॉस्टरिंग इंटरडिपेंडेंस. ओके, तो टुडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड रे आमे आहुरी इंपोर्टेंट हे गलानी काइना सप्लाई चेन हो, रूल हो, स्पेशलाइज रूल हो, टुडे ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को पाइचु. देन स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी. Durkheim emphasis on specialization leading to increase in efficiency demand value. Modern economies thrive in highly specialized rule, particularly in technology हो, knowledge based sector हो. Specialized हला सेइथरे rapid pace of technological change होउची, जोंतरे adaptability दरकार. सेटा changing होउची view of fixed specialization, somehow challenging the Durkheim view of fixed. So there is no fixed specialization, but सेटा छिए challenge करूची. Social integration enemy. Durkheim warned about the potential for enemy normlessness if the division of labor becomes extreme. The division of labor becomes extreme. This concern is relevant today with issues like job insecurity, automation, and rapidly changing skill requirement leading to social disintegration from some. For example, the decline of traditional manufacturing job in many Western countries has led to social problem in affected communities. Similarly, collective consciousness. Durkheim believed that the division of labor would lead to weaker collective consciousness. The modern context, in modern culture, while local ये गुड़ा जिनस गुड़ा मु डायरेक्ट एते बुझोनी काहे कि ना तुमरो क्लासेस रो पढ़ाबो टिके इन डेप्थ इथरे टाइम लागिवो बुझेला को केमिति लेखिबो खाली मु कहि दउची. बेसिकली तुमरो
कौन कौन पैरामीटर या ऊपर रखिबो कि एग्जामिन केमती करिवो कि डिवीजन लेबर जो देइथिले दरखाइन सेटा प्रेजेंटली वैलिड अछि ना वैलिड नै कोन चैलेंजेस फेस करूची सेटा आमे देखुचे सोशल इंटीग्रेशन एनोमी देखिले ताले कलेक्टिव कॉन्शियसनेस then gender and labor division. So collective consciousness in this modern context कौन local collective consciousness may be weakened धीरे धीरे collective consciousness weak हेलानी individualism बेसी बढ़ी ग्लोबल इशू लाइक क्लाइमेट चेंज हो ह्यूमन राइट्स ये धीरे धीरे न्यू फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएट होईची similarly gender and labor division Durkheim theory did not adequately address the gender inequalities the labor division today while progress has been made gender based division of labor remains significant social issue requiring an expansion of Durkheim's original concept. So, आउरी या पर डिटेल से कही नथिले बट से कथा से कहूची एबे जेंडर बेस्ड डिवीजन ये भी बहुत बड़ा इशू एबे भी अछि डिजिटल इकोनॉमी एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ द राइज ऑफ gig economy remote work and digital platform has created new forms of labor division not done by Durkheim से हेतर जान नथिले कि एमती डिजिटल इकोनॉमी आगु को this development both support increased specialization and challenging blurring work-life boundaries. Aspect of this, so Marxist critic Karl Marx argued that divisional labor in capitalism leads to alienation, class conflict, exploitation, not prosperity. Weberian critics Max Weber contended that increasing specialization lead to bureaucratic nationalization and loss of individual freedom. Overemphasis on consciousness. So first है कौन ना Marxist critic Karl Marx argued that division of labor in capitalism leads to alienation, class conflict, exploitation, not solidarity. लेबर हेले solidarity होबनी या आउरी conflict होबो. Karl Marx ठीक थिले. Weber कहले कौन ना increasing specialization leads to bureaucratic rationalization and loss of individual freedom. Bureaucratization. Then overemphasis on consciousness. Durkheim underestimate power, inequality, and conflict as a of social. And empirical limitation kona his assumption that modern society naturally achieve moral unity or interdependence may not hold true in the context of equality and honesty. तो तांकर assumption थिला धीरे धीरे naturally moral unity achieve करिवो से interdependence continue होबो सेटा ट्रू रथिला. The neglect of gender. Feminist scholars note that Durkheim ignored the gender division of labor and the role of women unpaid work. So these are in conclusion while Durkheim theory of division labor provides a valuable framework for understanding social cohesion and economy organization, it requires adaptation. It requires adaptation to fully explain the complexity. So basically, आमे Durkheim view with modern society से compare करचे एवं तांको criticize करचे. Core principle थिला interdependence and specialization remain relevant and today also it remain relevant. But बहुत सारा फैक्टर जोंडे की ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी चेंजेस इवॉल्विंग सोशल नॉर्म ये कंसीडर करबा जरूरी जोंडे की सेटा सेटले. ओके सो दीज आर सम क्वेश्चंस थिला आज हमें टिल माने ग्रुप बी रो दीटा क्वेश्चन देखले आउ चारिटा क्वेश्चंस पहला छटा क्वेश्चन बी रो रुहे आउ चारिटा क्वेश्चंस काली हमें कंप्लीट कर दवा. टिल देन सो जो माने फाउंडेशन बैचेस रे जॉइन करिवे फाउंडेशन बैचेस मात्र दीटा क्लासेस हेची जॉइन करंतु एवं मेंस पाई जो माने पढ़ी चंदी थरे समस्त एई बैच रे जॉइन करि परिबे जो टेस्ट सीरीज अछि एवं मेंटरशिप अछि. तो टेस्ट सीरीज मेंटरशिप मिसी के 8000 पड़छि आपण 6999 रे पाई परिबे जदी दीटा कॉम्बो नै जिवे एवं आपनकर एवरी जहा मु रेस्पॉन्स करि परि मु काइना टेस्ट सीरीज पई आ मेंटरशिप पई 50 जन पिला नउछि काइना बेसी पिला को हमें ये करि परिबेनी. सो जो माने जॉइन करिया चाहउछंती यथा शीघ्र ए नंबर रे कांटेक्ट करंतु देन यू विल गेट बेनिफिट. एंड मेंस पई जीएस पई भी टेस्ट सीरीज रहउछि एंड मेंटरशिप रहउछि ये भी दीटा मिसे की 9000 रहउछि आपण 7999 रे पाई परिबे सेटा भी मध्य आपण जॉइन करंतु. एवरीडे पीवाईक्यू डिस्कशन हबो क्वेश्चन डिस्कशन हबो एवरीडे बेसिस रे आपनकर हमें क्वेश्चंस दिया जिवो एवं डिस्कशन. टिल देन बाय बाय गाइस. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग. ये नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे. टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.